Welcome to Ganesha Coding Hub. So in this tutorial we're going to talk about the classes objects in Python. We have to cover all the concept of classes objects in deeply. So what do you mean by classes and objects? First we have to understand Python is an object oriented language. So almost everything in Python is an object. Okay, so with everything is in Python is like object. So if we have to define like x is equals to 5, so this is also an object which is have class like int, and x is a name variable, so it's like an object. So so all object with its properties and methods. Suppose x is equals to we have to store like a string, so in double quotation we have to store like words like hello world. So in this method we can use method and properties attributes. So class is like an object constructor or a blueprint for creating objects. So class is basically a blueprint for creating objects. So how to create a class? To create a class we use create keyword like class. So let's take an example to understand. So simply we have like class, simply we have like class is my class, okay, and thereafter we have x is equals to 5. Okay, now if there is class, then we have to create, then we have must to create a object for the particular class. So we can create object by via use the class name my class to create objects. For example, p1 is equals to my class. Okay, and after simply we have to print p1 dot x. Okay, p1 dot x. So what we do basically is we create a class named my class, and we have to, in that class uh, we have to define a variable name, that is x, which is of int type, and we have to assign a value to 5. सो आफ्टर डैट आउटसाइड क्लास, मतलब हम लोग बाहर आए क्लास के, और हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया p1 नाम का, ठीक, और उसमें हमने क्लास को स्टोर कराया, ठीक है, और फिर हमने p1 डॉट एक्स कर दिया. सो ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, जो p1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने पास किया प्रिंट में, और डॉट एक्स जो हमारा अंदर है क्लास के, ठीक है. तब इसे एक बार रन करके देखते हैं. सो जैसा कि आप देख रहे हैं आउटपुट स्क्रीन पे 5 प्रिंट कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है. सो इस तरह से हम लोग वी कैन क्रिएट क्लास, एंड वी कैन आल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट, एंड वी हैव टू पास द वैल्यू लाइक दिस. So we can easily implement the class and object. So now the next topic is the init function. So what do you mean by init functions? The simply to understand the meaning of the classes, we have to understand the built-in init function. So all classes have a function called init, which is always executed when the class is being initiated. So use the init function to assign values to object properties or other operations that are necessary to do when the object is being created. So we have to like create a class named like person, and use the init function to assign value for name and age. So let's do it. So we have simply, हमने एक क्लास बनाया, क्लास का नाम हमने क्या रखा, पर्सन, ठीक है. फिर क्लास के अंदर हम लोग हैं, फिर उसमें हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया इनिट, INIT इनिट. उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके अंदर सेल्फ के बारे में भी मैं बताऊंगा क्या होता है. सेल्फ हमने पास किया, फिर कॉमा हमने नेम पास किया पैरामीटर,
और हमने फिर एज पास किया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ओके, फिर हम लोग क्लास के बाहर आए, क्लास के हम लोग बाहर आए और हमने P1 एक ऑब्जेक्ट बनाया, P1 ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें हमने कॉल किया पर्सन, क्लास जो हमारा है पर्सन, उसको हमने कॉल किया। ठीक है, कॉल करने के बाद हमने क्या किया, उसमें पास किया हमने क्या, जॉन, जॉन। ओके, जॉन एज अ नेम एंड 36 एज एज। फिर हमने क्या किया, फिर हमने प्रिंट लिखा, फिर हमने प्रिंट किया P1, P1 ऑब्जेक्ट जो हमारा है उसको डॉट नेम। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रिंट P1 जो हमारा ऑब्जेक्ट है डॉट एज कर दिया हमने। अब इसे एक बार हम लोग रन करा के देखते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे जो सेल्फ है यहाँ पे, सेल्फ जो पैरामीटर है वो हम लोग क्यों पास कर रहे हैं उसको अच्छे से समझेंगे। पहले इसे रन करके देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वी हैव जॉन एंड एज इज 36। सो इनिट फंक्शन के बारे में एक नोट करने की बात है कि द इनिट फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली एवरी टाइम the class is being used to create a new object. So every time it calls itself automatically when the class is being used to create new objects. Okay, so in this way we can easily creating a class name and using the function like init and pass the parameter like name, age, and we will discuss further later about self parameter. So so just forget it, we will discuss about later. So next topic is about object methods. So object method can also contain method. Methods in object are function that belongs to the object. So let us create a method in person class. Simply we have to insert a function that prints a greeting and execute it on the P1 object. So what we do is simply we have to create a method. So while creating method we have to define a function def, sorry, def my fun. Here and here we have to pass self. Okay, so thereafter we have to print hello my name is self dot name. Hello my is name is plus self self dot name. Okay, so now we have to simply we have to call like P1 person John and 36, and thereafter we have to create object of P1. We have also like call P1 dot my fun. So basically what we do is simply we have create a method inside the class person. Okay, and we have to insert print greetings and execute on the P1 object. Okay, let's run.
So as you see on the screen, hello, my name is John. So simply what we do, we have created a class and we have to define a init function in which we have to pass an arguments or parameters like name, age. So we have to pass self dot name is equals to name and age self dot age is equals to age. Okay, and thereafter we have to define a method inside the class person, and that name of the method is my fun, and it's calling its call by my parameter is self, and it's simply print hello my name is plus self dot name. Now thereafter outside the class we have created a p1 object, and it calls simply person class, and thereafter in which we have to pass the attributes or parameter or arguments like John, that is name, and age, that is 36, and thereafter we have to simply we have to use the class method inside the class person. So simply we have p1 dot my found, that is method name, so it will execute this. Okay, so as you see on the screen, hello my name is John. Okay, so simply what is do is simply it takes the statement this and do this execution of statements. Now we have to understand the self parameter. So self parameter is a simple reference to the current instance of the class and is used to access variables that belong to the class. So simply we can access the variables that belongs to the particular class. So simply if you have to if we have something variables like name and age. Okay, so if we have name and age, so how to access these variables, simply we have to use self parameter as a reference to the current instance of class. So we can use self for the class person to access the variables name and age. Okay, to access the variable name and age. So we can simply say that the self parameter is a reference to the current instance of the class and is used to access the variable that belongs to the class. It does not it does not have to be named self. You can also call it whatever you like, but it has to be the first parameter of any function in the class. Okay, so simply we in here self we can also update to whatever we want, uh, but in class, if we define a class and in class we have to define a function like init. So first is a reference parameter to the current instance of the class. Okay, so the self is nothing but the reference parameter of current instance of the class, which is used to access variable that belongs to the particular class, the same class. Okay, so let's if we have to update, like we have to create like my obj. Okay, and here simple we have to my obj. Okay, and you see the same result. Sorry, we have to change the self, nothing but my obj. Okay, and we have to again change here my obj, and also here my obj. So all done. So let's run and check. So as you see on the screen, the same result came. सो हम लोग अगर चाहें तो यहाँ सेल्फ जो पैरामीटर है उसे पास करें या फिर अपना कोई भी नाम देते हैं उस पैरामीटर को, लेकिन सबसे पहले अगर आपको कोई एक क्लास अगर आप बना रहे हैं और उसमें आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो जो सबसे पहला जो पैरामीटर आएगा वही जो है वो क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने में मदद करेगा। जैसे कि हमने क्या किया, हमने माई ऑब्जेक्ट जो है ओबीजे
वो इंस्टेंस रेफरेंस इंस्टेंस वेरिएबल हमने यूज़ किया एक्सेस करने के लिए नेम और एज। सो नेम और एज को हम लोग कैसे एक्सेस किए, माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, माई ओ बी जे डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। ओके, फिर उसके बाद हमने क्लास के अंदर एक मेथड आप खुद का क्रिएट किया, और वो जो है वो रेफरेंस जो वेरिएबल है, मतलब एक पैरामीटर वो माई ऑब्जेक्ट वो भी कॉल खुद को कर रहा है, और फिर हमने प्रिंट करा दिया हेलो माई नेम इज ओ बी जे डॉट नेम। अब हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है। जब आप क्लास बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट सिंपली हम लोग बनाए, और उसमें क्या किए, पर्सन जो हमारा क्लास है उसको कॉल किए, और उसमें पास किए जॉन और उसका एज। ठीक है, फिर हमें हम क्या किए, उसी ऑब्जेक्ट की मदद से हमारा जो क्लास के अंदर जो हमने मेथड बनाया था उसको हमने माई फन डॉट कॉल कर दिया। ठीक है, सो ऐसा इससे होगा क्या कि जॉन जो है वो माई ऑब्जेक्ट डॉट नेम में जो नेम है हमारा वो जॉन जॉन एज अ रिजल्ट लेगा, और जो हमारा जो फंक्शन है मेथड है ये पूरा एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल किया उसको। सो इस तरह से वी कैन ईजिली implement the methods, and we can easily understand the self the reference instance of class. So now let's talk about the how to modify the object. So if we want to modify, we simply use like p1 dot is suppose if we want to modify the age of the John, so p1 dot simply age is equals to, now it is 40. Okay, and we have to call like p1 dot my function, that is method. So in this method we have to print like hello my name is my obj dot name plus i am I am str I am like my obj dot I am my obj dot age, thereafter years old. Okay, let's run this code and check the updated value. So as you see on the screen, hello my name is John, I am 40 years old. Okay, I am 40 years old. So we can simply update our values or modify our values by using like p1 dot name or age, and thereafter if we want to delete, so simply use del. So simply use del keyword del p1 dot is. Okay, and let's run this code. So as you see it show errors. So because we deleted the so okay, 1 second. We have to print p1 dot age. Okay, let's run this. So as you see, hello my name is John, and thereafter line 10 in module print p1 dot attribute person object has no attribute age. So it shows no attribute of age because we delete the age, so it shows errors. So now the next subtopic is the pass statement. So if we have if we have to create a class, and somehow we don't have any content for a class, and so we simply put a pass statement to avoid getting an error. Okay, let's take example to understand. So simply we have to create a class p1, and there is no content, so simply
I pass the value, and let's check. So as you see, there is no there is only a white screen, so we can use pass to avoid getting an error. So that's all for today, guys. Thank you for watching. Please do subscribe and like the videos, and don't forget to share. Again, thanks for watching.